हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एलिमेंट। नेशनल इनकम की जर्नी में आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के टुवर्ड्स मूव करेंगे। प्रीवियस सेशन हमने देखा कि नेशनल इनकम को क्रैक करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। So today, without wasting time, we will be proceeding with value added method to calculate national income. Now this value added method is also known as product method, industrial origin method as well as net output method. These all names will be helpful to you from MCQ viewpoint as well. Previous session में हमने ये भी देखा कि नेशनल इनकम को जब हम अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं, हमको नेशनल इनकम के अलग अलग एग्रीगेट्स मिलते हैं. As of that, when we calculate national income using value added method, हम जो एग्रीगेट पे अराइव करेंगे that is GDP MP. So value added से GDP MP पे अराइव करने के लिए the formula is value of output minus intermediate consumption. Now this formula is made up of 2 technical things: value of output and intermediate consumption. Let's try to understand both of them one by one. First is value of output. आप value of output कैसे निकालोगे? By adding 3 things: sales plus change in stock plus goods used for self consumption. अब जब आप सेल्स बोलोगे, सेल्स में किन किन थिंग्स को इंक्लूड करोगे? सेल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ऑल 3 सेक्टर्स के सेल्स विल बी एडेड टू अराइव एट वैल्यू ऑफ आउटपुट. सेल्स में आप डोमेस्टिक सेल्स को भी लोगे, आप एक्सपोर्ट्स को भी लोगे. सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर बिकम्स योर सेल्स. Plus the second thing is change in stock. Whenever you say change in stock, remember that it is nothing but closing stock minus opening stock. And the third one is goods used for self consumption. अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई फार्मर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स अपने घर में यूज कर रहा है, then that also will be considered as a part of value of output. So value of output is made up of 3 things: sales, change in stock and goods used for self-consumption. Sometimes this value of output is also known as GVO. GVO मतलब gross value of output. So first thing is this value of output. The second technical thing was intermediate consumption. So let's see what it is. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आप किसको लोगे? वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनकम्स को ध्यान में लेंगे. वी सॉ इन प्रीवियस सेशन दैट देयर आर 4 FOPs: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एंड दीज 4 FOPs अर्न रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. When we talk value of non-factor income, we mean to say that IC में इन 4 को ध्यान में नहीं लेना. We are not supposed to consider any of these 4 factor incomes while we are arriving at IC. अगर इनको कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? तो you may be considering purchase of raw material as a part of IC. You may also be considering expenditure on power as a part of IC. अब ये क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट अर्न करने के लिए आपको कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा. सो दिस इज सिंपली दैट खर्चा विच यू इनकर टू अर्न द वैल्यू ऑफ आउटपुट. सो आई होप यू आर क्लियर विथ GDP MP पे अराइव करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दोनों के बाइफिकेशंस आल्सो इज क्लियर. नाउ जब भी कभी हम नेशनल इनकम के किसी भी मेथड को यूज करके इनकम को कैलकुलेट करते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू टेक केयर. देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान में लेने होंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो मूविंग ऑन विथ
प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। रेड में जो लिखा है वो थिंग्स को आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ध्यान में नहीं लेना। यू आर नॉट सपोज टू कंसीडर द थिंग्स इन रेड एंड द थिंग्स इन ब्लू, you are supposed to include as a part of your national income. So let's see what they are. Sale or purchase of second hand goods not to be considered. अब इकोनॉमी में कोई भी सेकेंड हैंड गुड की परचेज सेल होती है, उसकी वैल्यू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कभी भी ध्यान में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज जब वो गुड फ्रेश रहा होगा तब उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम आपने ध्यान में ले ली होगी। अभी तो वो सेकंड हैंड परचेज एंड सेल हो रहा है, वापस अगर उसकी वैल्यू लोगे तो यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए सेकंड हैंड गुड की परचेज और सेल को हम कभी भी ध्यान में नहीं लेंगे। द सेकेंड वन इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड while calculating national income। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कर रहे थे तभी भी हमने देखा था इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी किसी भी मेथड ऑफ नेशनल इनकम से नेशनल इनकम अराइव करने में ध्यान में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज हम हर बार फाइनल गुड्स की वैल्यू ध्यान में लेते हैं। वी ऑलवेज कंसिडर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स while अराइविंग एट नेशनल इनकम। अब वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है। अगर हम फिर से यहाँ पे उसे इंक्लूड करेंगे तो अगेन वी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग वी विल ऑलवेज इग्नोर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वी विल नॉट कंसिडर इट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। One more thing, intermediate goods and intermediate consumption are two different things. Don't get confused, intermediate खाली word common है दोनों में। These are intermediate goods जो हम कभी भी consider नहीं करेंगे while arriving at national income, and this intermediate consumption which we will consider while arriving at national income. The next one is commission earned on sale or purchase of second hand goods। second hand goods खुद का अगर सेल परचेज हो रहा है तो उसको we are supposed to ignore, बट अगर कोई एजेंट कोई सेकेंड हैंड गुड की परचेज सेल का दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन करवा रहा है, वो एजेंट तो भले गुड्स सेकेंड हैंड है बट दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन तो फर्स्ट टाइम करवा रहा है ना। बिकॉज ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम करवा रहा है वो अपना कमीशन भी तो फर्स्ट टाइम अर्न कर रहा है। एंड दस कमीशन अर्नड ऑन परचेज और सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड व्हाइल अराइविंग एट नेशनल इनकम। गुड्स का परचेज सेल ध्यान में नहीं लोगे, बट वो बेचारे एजेंट ने जो कमीशन अर्न किया है ड्यू टू द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, दैट यू विल कंसिडर। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट मतलब अगर ये प्रेमाइसेस जो मैं अभी रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रही हूँ वो प्रेमाइसेस अगर मैं यूज नहीं करती तो मैं किसी और को रेंट पे देती। अगर मैं रेंट पे देती तो मुझे मे बी पर मंथ 20,000 रेंट मिलता, बट बिकॉज आई एम माई सेल्फ यूजिंग माई ओन प्रेमाइसेस वो 20,000 रेंट मुझे फॉरगो करना पड़ रहा है, वो 20,000 रेंट मुझे लेट गो करना पड़ रहा है। सो दैट 20,000 रेंट जो मैं फॉरगो कर रही हूँ, जो मैं लेट गो कर रही हूँ, दैट रेंट इज नोन एज इम्प्यूटेड रेंट। तो मैंने खाली अज्यूम कर लिया कि मैं अगर ये प्रेमाइसेस रेंट पे देती तो मुझे 20,000 रेंट मिलता, मिला नहीं है, मिलता, दैट इज एन अजम्पशन। इवन इफ मिला नहीं, इवन इफ मैं अज्यूम कर रही हूँ मिलता, but still that imputed rent will be considered while arriving at national income. So these are the precautions that you need to take care while calculating national income. अगर आपके लक अच्छे हुए तो these precautions can come as a theory question for 3 or 4 marks.
A straightforward question can be there. Write precautions while calculating national income using value added method. 1 2 3 4 करके लिखो, 3 marks घर ले जाओ. या a bit twist करके question will be there कि tell whether the value of intermediate goods will be considered while arriving at national income or not. Give yes or no with valid argument or with valid reason. Then your answer will be no. The value of intermediate goods will not be considered because this value is already included in final goods. And now again, if we will consider, then you will have the problem of double counting. So to avoid that, value of intermediate goods will not be considered. So like that also, a bit application level type of question can also be asked from any of this. So I hope the precautions are clear from sums viewpoint, from 3-4 marks theory viewpoint, as well as from question in form of yes or no wala statement viewpoint also. Now let's see value added method के कैसे sums आते हैं. The first question is asking you to calculate the value of NVAFC and certain items are given. You have been given with consumption of fixed capital, import duty, output sold in units. Directly sales का amount नहीं दिया, unit में कितना output sale करा, per unit price कितनी थी, that is given. So based on this two, you are supposed to find sales. Net change in stock, intermediate cost and subsidy. Based on these many items, you are supposed to arrive at NVAFC. We know that value added method का formula अगर हम use करेंगे तो सबसे पहले we will arrive at GDP MP. GDP MP पे arrive करके we will use the chakra which we learned in previous session, and from GDP MP based on this chakra we will arrive at whatever is asked, that is NVAFC. So let's try first calculating GDP MP. Write answer number 1 and GDP MP is equals to, we saw the formula that it is value of output minus IC. So we will write the same formula, value of output minus IC. See, even if you write this much also, you will get half mark. Because ऐसा नहीं होता कि आपको final answer का ही mark मिलेगा. There are marks allotted to every step. So if you follow this step, इसके marks जो answer की में allotted होंगे, that you will be getting. अगर ये step skip किया and directly आपने amounts लिखा, फिर इसका जो allotted mark होगा, वो mark भी skip हो जाएगा. So don't skip any steps, go for all the steps. Value of output, we are supposed to consider 3 things: sales, change in stock and goods used for self consumption. हमको इस टाइम ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया, so we will go with value of output में sales. As I told you, sales भी directly नहीं दिया, आपको unit sold and per unit sale price is given. So 2000 यूनिट सेल करे, 10 रुपीज का 1 यूनिट. सो आपका सेल्स कितना हुआ, 20,000 रुपीज प्लस चेंज इन स्टॉक दे हैव डायरेक्टली गिवन. नाउ दिस टाइम दे हैव गिवन -50. सो वी विल टेक -50, नो प्रॉब्लम. माइनस IC, इंटरमीडिएट कॉस्ट 10,000 रुपीज. So if you open the bracket, 20,000 minus 50 minus 10,000. So that will be 9,950. आप कभी भी किसी भी एग्रीगेट पे अराइव करो तो राइट रुपीज एंड अंडरलाइन दैट आंसर सो दैट पेपर चेकर को पता चले कि एटलीस्ट आपने इतना कैलकुलेशन तो बराबर से किया है. एंड फाइनल आंसर में ऑलवेज पुट रुपीज का साइन एज वेल. नाउ हम ये फॉर्मूला को यूज करके वी अराइव्ड एट जीडीपी एमपी
But the question is not asking you to calculate GDP-MP, it is asking you to calculate NVAFC. Now you can always replace VA with DP. You can call GDP-MP as GVA-MP as well. Especially in value added method, instead of DP, sometimes the question will have VA. So that is nothing but gross value added, net value added at factor cost. Now GDP MP say you are supposed to arrive at NDP and that too FC वाला variant. So let's see अगर हम step by step जाते हैं तो how we will do. GDP से अगर NDP पे जाना है तो we are supposed to deduct depreciation. So we will move to NDP because हमारे पास GDP का MP वेरिएंट है. पहले हम NDP के भी MP वेरिएंट पे अराइव करेंगे. That is equals to GDP MP minus depreciation. GDP MP we just now found 9,950 minus depreciation. Depreciation directly नहीं दिया. For depreciation every time they'll give one thing or the other. आपको make out करना है depreciation मतलब क्या. In this case consumption of fixed capital means nothing but depreciation. If you wish you can write in margin or you can write in sticky note what all things are used instead of depreciation. Last में जब आप quick recap करोगे this will be helpful to you. So depreciation मतलब consumption of fixed capital that is 600. So 9950 minus 600 you will arrive at rupees 9,350. I told you जब भी कभी किसी aggregate पे arrive करो put the rupees की sign and underline the answer. अब हम NDP MP पे तो आ गए. NDP MP बोलो या NVA MP बोलो, it is one and the same. But we are supposed to find NVA at FC. MP पे आ गए, we are supposed to go to FC. अगर FC से MP में आने में NIT को प्लस कर रहे हैं तो when we go reverse NIT को माइनस करेंगे and like that we will arrive at NDP FC or you say NVA FC, it is one and the same. कैसे arrive करेंगे? NDP MP this time reverse जा रहा है so minus NIT. NDP MP just now we calculated 9350 minus. Whenever you have NIT put bracket because NIT is indirect taxes minus subsidy. अब दोनों में से अगर दोनों की वैल्यू दी है well and good put it. अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो take it as 0. But always जब भी whenever you have NIT to consider bracket put on करके both values put on करने की कोशिश करो. जिस भी किसी की नहीं दी take it as 0. Like import duty is given. Import duty is nothing but it is a kind of indirect tax. हर बार indirect tax को indirect tax करके नहीं देंगे. Sometimes they can give import duty, sometimes they can give GST. तो फिर वो आपको समझना है these are all indirect taxes. Given is 400 rupees minus subsidies. Subsidy given is 500 rupees. So 400 minus 500 that will be 9350 minus 100 because 400 minus 500 is minus 100 and if you open bracket plus 100 and so rupees 9,450 is your final answer. Highlight it. So like this follow every step rather than directly jumping onto the final answer what is asked in the question. At least if this is right you will get marks till this much.
If this is also right, you will get marks for this much. If by chance ऐसा हुआ कि आपने माइनस NIT के बदले प्लस NIT कर दिया, so your answer of course will be wrong. उससे ऊपर तो जो किया वो तो right था, you will be scoring mark for that. So every mark, every half a mark even do count. So don't take any chance to get anywhere deduction of mark. Better follow step every time. I hope this question is clear to you. Let's see another sum. Now this question, it is asking you to calculate sales. हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से कोई ना कोई एग्रीगेट ढूंढना हो. GDP-MP ढूंढो या लाइक प्रीवियस वन NVAFC ढूंढो. एग्रीगेट नहीं पूछा, आपको फॉर्मूला का कोई छोटू सा पार्ट मिसिंग है. एज ऑफ दिस सेल्स मिसिंग है, आपको सेल्स पे अराइव करना है. तो टू अराइव एट सेल्स, लेट्स सी व्हाट इज गिवन. सब्सिडी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. टू अराइव एट फॉर्मूला का एक छोटू सा पार्ट, आपको एक एग्रीगेट दिया है. जो भी कभी सम में एग्रीगेट दिया है, ऑलवेज स्टार्ट विद दैट एग्रीगेट टू अराइव एट एग्रीगेट ऑफ योर फॉर्मूला. दैट इज, हमको NVAFC दिया है तो हम NVAFC से स्टार्ट करेंगे टू अराइव एट GDP-MP. एंड जब GDP-MP की वैल्यू मिल जाएगी, इनमें से जो भी मिसिंग होगा, इन आवर केस दैट इज सेल्स, खुद मिल जाएगा. लेट्स सी हाउ टू क्रैक इट. We will start with finding GDP-MP from NVAFC. GDP-MP क्यों ढूंढेंगे हम? बिकॉज हमको GDP-MP की वैल्यू चाहिए फॉर्मूला के एक मिसिंग आइटम को कैलकुलेट करने के लिए. सो अब आपको NVAFC दिया है. NVAFC में से इफ यू फॉलो दिस चक्र, GDP-MP पे कैसे अराइव करेंगे. Let's see. If every time steps नहीं करने, I'll tell you one more way. आप path बना लो, path बना के you will be able to reach. Let's see how to make the path. Suppose you have NVAFC या आप बोलो NDPFC, it is one and the same. पहले तो FC में से हमको MP पे अराइव करना है, because we are supposed to reach at GDP-MP. FC में से NP पे अराइव करने के लिए प्लस NIT. NVAFC में NIT को प्लस करोगे, you will arrive at NVAMP या NDP-MP, whatever you say. NDP पे तो पहुंच गए, अब आपको GDP पे पहुंचना है, रिवर्स आना है. तो डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे? यस, डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे. So if you add depreciation, you will reach at GDP का MP variant. Now इसको फॉर्मूला में पुट ऑन करो to calculate GDP-MP. What you are supposed to do? NVAFC plus NIT plus depreciation. इससे चालू किया, इसको ऐड किया एंड इसको ऐड किया, एंड वी विल अराइव एट GDP-MP. दैट इज इक्वल्स टू NVAFC आपको दिया है 2000 रुपीज. सो 2000 प्लस, आई टोल्ड यू जब भी आपको NIT दिखे पुट अ ब्रैकेट. NIT इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. सी व्हाट इज गिवन, सब्सिडी इज गिवन बट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया. दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू लास्ट टाइम ऑल्सो. अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, टेक इट एज 0 माइनस सब्सिडी. सब्सिडी गिवन इज 200 रुपीज. क्लोज द ब्रैकेट प्लस depreciation. Depreciation they have given again as consumption of fixed capital 700. That is nothing but depreciation. So plus 700. If you open the bracket, 2000 minus 200,
plus 700. So you will have 2500 rupees as our GDP MP. अब हमें फॉर्मूला का ये वैल्यू मिल गया. अभी इफ वी विल पुट दिस, सेल्स जो मिसिंग था वो भी मिल जाएगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. कम टू द मेन फॉर्मूला. GDP MP is equals to value of output minus IC. Value of GDP we already have, so we will replace it 2500. Value of output बोले तो sales plus change in stock. This again is not given. So value of output को हम bifurcate करेंगे. Sales plus change in stock minus IC. Intermediate consumption आपको दिया है 3000 rupees. So 2500 is equals to sales हमें find करना है plus change in stock के लिए they have given opening also, closing also. So again we will put the formulas bracket. Closing stock minus opening stock मतलब change in stock. So instead of change in stock we will write 600 minus 100. This is closing, this is opening. 600 minus 100 minus IC का 3000. So 2500 is equals to sales plus 600 minus 100. 500 minus 3000. 2500 is equals to sales minus 2500. सेल्स को यहाँ बेचारे को अकेला रहने दो. माइनस 2500 को इस साइड लेके जाओ. इस साइड लेके जाएंगे वो प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी 2500 plus 2500 is equals to sales, and thus sales is equals to rupees 5000, and this is your final answer. Highlight it. तो the question can be like this also. कोई ना कोई एक एग्रीगेट की वैल्यू दे दी है एंड कोई ना कोई फॉर्मूला का पार्ट मिसिंग है which you are supposed to calculate. I hope even this type of question is clear to you. Let's see another one. The question is asking you to find NVAFC and certain items are given. You have been given with durable use producer goods with a lifespan of 10 years. Single use producer goods, sales, unsold output during the year, and GST is given. Now everything is new and everything is given in a twisted manner. Let's try to crack them out. Durable use producer goods. You remember when we did classification of goods, we said that durable goods are such goods which can be used for a longer span of time. Several years के लिए use होंगे. Several years के लिए use होंगे ऐसे durable producer goods है. मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स. सेवरल ईयर्स कितने ईयर्स चलेंगे? 10 ईयर्स चलेंगे. प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स से फॉर एग्जांपल मशीन 10 ईयर्स चलेगा. 10 रुपीज की वैल्यू का मशीन. यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू आस्क यू टू क्रैक डेप्रीसिएशन. नाउ यू रिमेंबर लास्ट टाइम 11th क्लास में जब आपने अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन करा था, डेप्रीसिएशन का सिंपल फॉर्मूला इज कॉस्ट अपॉन लाइफ स्पैन. कॉस्ट इज 10 rupees and लाइफ स्पैन इज 10 years. So as of that, if we calculate depreciation cost upon life करके, cost is 10 rupees, life is also 10 years span. Depreciation will be 1 rupee. So depreciation directly nahi diya, but they have given it like this. So based on this, you'll be able to arrive at depreciation. Let's crack what this is. Single use producer good.
नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो ज़्यादा नहीं चलता, एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, ऐसा प्रोड्यूसर गुड 5 रुपीज़ का है। अब ऐसा कौन सा गुड होगा जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर करेगा? मे बी दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट रॉ मटीरियल. सो this is raw material which we will take as IC, because here we did IC में intermediate cost में you can consider the purchase or the amount spent on raw material. Sales directly दिया है. Unsold output during the year. During the year output produce तो हुआ है but unsold, stock बेचारा रह गया है. That is they are trying to talk about closing stock of 2 rupees, and GST is nothing but a kind of indirect tax. So like this, almost everything except this Garib sales, they have twisted and given the information and asking you to find NVAFC. Now first we will begin with calculating GDP MP, because formula में पहले वो मिलेगा. GDP MP is equals to value of output minus IC. Value of output मतलब sales. So 20 rupees sales plus change in stock. Change in stock, closing stock minus opening stock. This is closing stock, जिसकी भी वैल्यू नहीं दी, take it as 0 minus 0. Opening stocks value they have not given. And IC they have given in a way single use producer good. So that is 5 rupees minus 5. Now if you open the bracket, 20 plus 2 minus 5. So that will be रुपीज 17. हमको GDP MP मिल गया. नाउ वी आर सपोज टू अराइव एट NVAFC. चक्र को फॉलो करो. NVAFC बोलो या NDPFC बोलो, इट इज वन एंड द सेम. अगर आपको एवरी टाइम स्टेप्स फॉलो नहीं करने सारे, यू कैन फर्स्ट सेट दी पाथ. पाथ के बेसिस पे डायरेक्टली नाउ यू कैन फाइंड NVAFC. पाथ कैसे बनाएंगे? वी हैव GDP MP. GDP MP से इफ यू वांट टू अराइव एट NDP MP, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रीसिएशन एंड यू विल अराइव एट NDP MP. NDP MP से NDP FC पे अराइव करना है. MP से FC पे अराइव करना है. यू हैव टू माइनस NIT एंड यू विल अराइव एट NDPFC बोलो या NVAFC बोलो, वन एंड द सेम. सो नाउ स्टार्ट विथ दिस इज योर पाथ. इस पाथ के बेसिस पे यू कैन हैव द फॉर्मूला फॉर NDPFC इज इक्वल्स टू GDP MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT. GDP MP जस्ट नाउ हमको मिला 17 माइनस डेप्रीसिएशन, वी क्रैक्ड इट हियर, इट इज 1 रुपी. सो माइनस 1 माइनस. जैसे ही आपको NIT आए, पुट दी ब्रैकेट. वी वांट NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स GST के फॉर्म में दिया है 1 रुपी माइनस सब्सिडी दे हैव नॉट गिवन. सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दोनों में से जो नहीं दिया टेक इट एज 0. सो 1 माइनस 0. ओपन द ब्रैकेट. 17 minus 1 minus 1. So now if you open 17 minus 1 minus 1, so it will be rupees 50. अगर क्वेश्चन में ये सारे जो भी अमाउंट्स दिए वो इन लैक्स, इन करोर्स ऐसे दिए है, तो whenever you arrive at any variant, write in lakhs. Whenever you arrive here, write in lakhs, in
crores, whatever is given. So I hope this twisted wala question is also clear to you. Now आप जो भी बुक यूज कर रहे हो उस बुक में से जो भी सम्स आप करोगे you will be able to solve. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मास्टरी भी अचीव करोगे. So I hope you practice as many sums as possible. For more such informative sessions, if you have still not subscribed the channel, do subscribe it and press the bell icon so that you remain updated with every session. Until next session, stay tuned and goodbye.